Welcome to our class Deep Insights. In our previous class, we have discussed that Gagne's 8 types of learning and about some notes about Gagne's hierarchical theories of instruction. So today we are discussing about 9 instructional events. Gagne's 9 events are specific actions that teachers can take to guide learners through the learning process. Gagne's करो not a event ଦେଇଛି जोटा कि specific action ଉପରେ based that teachers can take to guide the learners. ତ learner ମାନଙ୍କୁ guide କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଛି learning process ରେ କିଛି instruction ଦେଇଛନ୍ତି. instruction events କ'ଣ events ତାକୁ ଦେଖିବା ହେଲା. ତ gaining attention ତାର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ରୋଲ ଗୁଡାକ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା. gaining attention, informing learners about objectives, recall of prior learning ହେଲା, presenting the stimulus, providing learning guidance, eliciting performance, providing feedback, assessing performance, enhancing retention and transfer. ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଯାଉଛି ଯେ gaining attention. ତାହେଲେ टीचर माने दृष्टि देवे जे पिला माने पढुचंदी कि नहीं हैला. informing learner about objectives. learner को inform देवे कौन objectives ऊपर information देवे. तो recall of prior learning. ताल पूर्व ज्ञान हैला, पूर्व ज्ञान को recall करिवारे सहायता करिवे. then presenting the stimulus. ताल new knowledge टा कौन ताकू present करिवे. providing learning guidance. तांकू guidance provide करिवे. बाइडी रोल टा टीचर एज अ गाइड हबो. तो eliciting performance तापरे परफॉर्मेंस को परख निरीखिबे हैला. तापर प्रोवाइडिंग फीडबैक. ताले सेमानक रेस्पॉन्स को नियटी फीडबैक बोलिका कुआ होची. तो असेसिंग परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस कोन से पढेइले हैला ताको असेस करिवे आ स्टूडेंट रो कोन से पढिला न पढला ताको असेस करिवे. तो एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर हैला. ताले कौन से पढ़िया देखिए और ताको ट्रांसफर करिवे. तो आज पई एतिकी थिला. थैंक